or welcome back to my YouTube channel. I am Noble, and if you are familiar with the latest trend, then you might have heard about the clean girl makeup look. So basically, clean girl makeup look is a makeup look in which you use minimal makeup products and create a very natural makeup look. Basically, daily wear kind of makeup look. So today in this video, I am going to create this clean girl makeup look. So without wasting any time, let's get started. Missing someone without you. Missing someone. So I have already moisturized and prepped my skin, and now I am going to use this Inside Concealer Color Corrector palette, and from this concealer palette I am going to use this orange color corrector under my eyes. बेसिकली जहाँ जहाँ मेरे थोड़े डार्क सर्कल्स हैं वहाँ पे मैं इसको यूज़ करूँगी हल्का हल्का. Now I will use this Inside foundation, and I will take some foundation on the back of my hand, and I am going to use this foundation brush, और मैं थोड़ा थोड़ा लेकर इसको अप्लाई करूँगी, और इसको हमने स्टिपलिंग मोशन में लगाना है, और हमने कोशिश करनी है कि हम कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करें इस मेकअप लुक के लिए, क्योंकि हमें एकदम नेचुरल मेकअप चाहिए मिनिमल प्रोडक्ट्स के साथ. मेकअप लुक काफ़ी अच्छा लगता है, आई मीन काफ़ी नेचुरल लगता है, और डेली वेयर के लिए काफ़ी अच्छा मेकअप लुक है. And we will apply some foundation on our neck as well. And now from the same concealer palette, I am going to use this shade. ये exactly मेरी स्किन टोन का ही शेड है, और ये कंसीलर के लिए काफ़ी अच्छा और नेचुरल रहता है. And our base is done. Now I am going to fill in my eyebrows using this Blue Heaven eyebrow pencil. This is in the shade grey, और ये काफ़ी नेचुरल आईब्रो पेंसिल, और ये काफ़ी नेचुरल शेड है, और मैं जस्ट अपने जहाँ भी मेरे स्पार्स एरिया है थोड़ा आईब्रोज में उसको ही फिल इन करूँगी नेचुरल इफेक्ट के लिए.
am going to use this Huda Beauty Nudes eyeshadow palette, and from this palette I am going to pick this shade Tickle, and I will apply this shade all over my eyelids and blend this. Now I am going to use this shade Lace. ये काफ़ी नेचुरल और लाइट शेड्स हैं और ये पता भी नहीं लगते इतना ज़्यादा कि आपने लगाए भी हैं अपनी आईज पे. That's why I am using these shades. And now I am going to use this Blue Heaven liquid liner और मैं बहुत पतला eyeliner लगाऊंगी. Now I am going to use this eyelash curler to curl my eyelashes. And I am going to use this Maybelline Hyper Curl Mascara. I will apply on my lower lashes as well. And now I am going to use this Insight lipstick as a blush. It is in the shade 27 Top Notch और ये काफ़ी ब्यूटीफुल पिंकिश न्यूडिश कलर है. Again, very easy to blend. ये आपको काफ़ी नेचुरल And now I am going to use this Bobbi Brown highlighter in the shade Champagne, and this is how the shade looks like. ये आपको काफ़ी नेचुरल इफेक्ट देता है क्योंकि इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी नेचुरल है और इस मेकअप लुक के लिए ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है. You all can see how natural it looks. I will highlight my usual places, my cheekbones, nose, lips, and my inner corners. And now I am going to use this Clinique lip gloss in the shade Cocoa Pop.
And on top of this, I am going to use this Swiss Beauty liquid lipstick in the shade Real Nude. And this is the final finished makeup look. I hope you like this clean girl makeup look. If you do, then don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. I will see you all with a new video super soon. So till then, stay happy, stay safe.